हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर बॉक्स एंड कॉक्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज कॉक्स वांट्स मिस्टर बाउंसर टू चेंज हिज bolster? इसका आंसर है कॉक्स वांटेड मिसेस बाउंसर टू चेंज हिज bolster बिकॉज ही कुड नॉट स्लीप कंफर्टेबली ड्यूरिंग द नाइट. He had the habit of bulging bolster. Some of its feathers had been taken out. Okay. Next question number 2. Who does Cox suspect in using his stuff? इसका आंसर है Cox suspect that the landlady Mrs. Bouncer was using his stuff. Next question number 3. Why does Cox say this gentleman smoke instead of emulating the example of all other sorts of smoke and going on the chimney things were proper to effect singularly by taking the contrary direction? इस क्वेश्चन का आंसर है He implies that Mrs. Bouncer smokes secretly. She states that the gentleman in the attic is hardly ever without a pipe in his mouth, but she commits an error when she says that the gentleman sits smoking his pipe on the mantelpiece. This makes Cox say in wonder how that gentleman's smoke takes an opposite direction towards him instead of going up the chimney. ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. How is Mrs. Bouncer idea of renting out the same room to two sets of lodgers a capital idea? इस क्वेश्चन का आंसर है renting out the same room to two sets of lodgers is a capital idea because neither of the two lodgers knows the other. She is getting double rent for her room, so it is beneficial for her. Next question number 5. As soon as Cox leaves the room, Mrs. Bouncer gets busy in the room. What does she do and why? इस क्वेश्चन का आंसर है she puts Mr. Cox things out of Mr. Box's way. She takes the three hats, Cox's dressing gown and slippers, opens the door at left and puts them in. She then shuts the door and locks it. She removes Cox's things to ensure that Box does not happen to see any of them. She also makes the bed in such a way the head of the bed for Mr. Box becomes the foot of the bed for Mr. Box. Okay, next question number 6. Who is Box angry with as he enter? Why? इस क्वेश्चन का आंसर है Box is angry with the man with whom he collides on the stairs. He has come after finishing his night duty. He is exhausted and wants to sleep. He had an exchange of words with the man on the stairs. ये था क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 टेक द करेक्ट ऑप्शन है When Box returned to his room in the morning, is he? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं cheerful, exhausted और energetic. एंड why? इसका आंसर है exhausted. एंड वाई को भी हमें एक्सप्लेन करना है. इट इज़ बिकॉज ही हैज़ कम फ्रॉम हिज नाइट ड्यूटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वाई इज बॉक्स फील्स एजिटेटेड व्हेन ही स्टार्टेड कुकिंग हिज ब्रेकफास्ट? इस क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर बॉक्स फील्स एजिटेटेड बिकॉज ही कांट फाइंड हिज थिंग्स. हिज मैच बॉक्स इज गॉन. हिज कैंडल, coals and sugar are not at the place he left. He found his gridiron used by somebody. It smelt of red herrings. Next question number 9. Why did Cox come home early and what did he get for breakfast? इस क्वेश्चन का आंसर है Cox came home early because his employer did not allow him as he was late for his work. He got a mutton chop for his breakfast when he come back home early. Next and last question है question number 10. Though both Box and Cox start cooking breakfast, neither of them gets anything to eat. Why? इस क्वेश्चन का आंसर है दे डोंट गेट एनीथिंग टू ईट बिकॉज बोथ थ्रो ईच अदर्स पीस ऑफ मीट आउट ऑफ द विंडो. हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है. आई होप अब सभी को समझ आया होगा. इस चैप्टर में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कैरेक्टर स्केच ऑफ बॉक्स, कॉक्स एंड मिसेस बाउंसर को डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.